तो आज बात करेंगे किस तरह डेमोग्राफिक्स, क्रिप्टो मार्केट और ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके साथ साथ उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे किस तरह बीटीसी जो है वो आने वाले टाइम में इन फैक्टर्स को देखते हुए, यानी ग्लोबल लिक्विडिटी, डेमोग्राफिक्स और क्रिप्टो मार्केट्स को किस तरह हम यूज़ करते हुए बीटीसी के प्राइस की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत अपनी पिछली 1-2 वीडियोस में कि बहुत दफ़ा बीटीसी जो है उसका बहुत गहरा जो है वो रिलेशन है विद द ग्लोबल सप्लाई और मनी सप्लाई। तो इस चीज़ की आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर वी delve into the deeper details of the video, it's a recommendation to subscribe, like, leave a comment and share. So let's move into the video. तो आज बात करते हैं डेमोग्राफिक्स, ग्लोबल लिक्विडिटी एंड क्रिप्टो मार्केट्स की। अब डेमोग्राफिक्स क्या है? किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, उसकी एज, उसमें कितने लोग रहते हैं, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग एंड हाउ मेनी पीपल आर एजिंग, यानी कितने लोग जो हैं वो 50 रिटायरमेंट की एज से ऊपर हैं, हाउ मेनी पीपल आर basically contributing and as a working class working in a particular country, and how these factors actually contribute to the economic growth of the country. तो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की। सो आपके सामने स्क्रीन पर एक डेटा है जो कि बता रहा है दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ बाय 1750, यानी 1750 से लेकर 2001 मतलब 2100 तक जो हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में, अगले 100 साल जो हम गुजार रहे हैं, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत बुरी तरह डिक्लाइन हुई है, विच मीन्स दैट पीपल आर एक्चुअली नॉट रियली looking forward to have more babies. तो उस टाइम को देखते हुए annual growth rate of world population is declining, slightly falling down. और इसी चीज़ के साथ साथ एक उसका फैक्टर ये भी है कि this is happening because of the fertility rate, because there's a decline in fertility. Females right now are not fertile anymore. उसके अलावा उस fertility या infertility के इस मसले को के पीछे जो contributing factors हैं, that are basically fake foods, fast foods, sedentary lifestyle. By sedentary lifestyle, I mean you are actually not moving the way you have to move, basically gaining more fats, having more diseases, and basically not really having that kind of a lifestyle which makes you more healthy. तो ये उस चीज़ की तरफ कंट्रीब्यूशन है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके साथ साथ माइक्रो प्लास्टिक्स का यूज़ करना, हमारे हर डेली के जो भी ईटेबल्स हैं उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी फूड प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स में जो है वो ले रहे हैं, फ्रॉम वाटर बॉटल्स टू प्लेट्स टू एवरीथिंग। आपकी क्रॉकरी तक जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स पे यानी प्लास्टिक की बन चुकी है। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये पता लगता है कि these things are basically the hormone disruptors, जिससे आपकी fertility rates डिक्लाइन होते हैं। और उसके अलावा आपकी फूड environment, pollutant, stressful lifestyle और work environment जो है वो बहुत stressful है। That is another factor why people are not fertile or women are not fertile anymore. तो उसके सामने अगर आप देखें तो ओवरऑल स्क्रीन पर कि fertility rate जो है वो पर बर्थ पर वुमेन हैज़ ड्रास्टिकली डिक्लाइन, यानी जो बर्थ पर वुमेन 7 बर्थ्स पर वुमेन से ये चीज़ फॉल करके 1 बर्थ पर वुमेन आ चुकी है, यानी 1 बर्थ पर वुमेन, 2 बर्थ पर वुमेन। और ये नंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान और चाइना के नंबर्स हैं जो कि वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज कंसिडर की जाती हैं। टॉप 5, टॉप 6 वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज कंसिडर की जाती हैं, ये उनके नंबर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेमोग्राफिक्स हिस्ट्री की, जिसमें बात की जा रही है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो एजिंग। इसका मतलब है कि जो बेबी बूमर्स थे, यानी वो लोग जिनकी एज 50 से लेके 80s तक थे, they are basically aging now. So उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, but at the other in contrast to this number in front of you, the screen is telling you that this number has drastically increased, यानी वो लोग जिनकी एज 65 से ऊपर है 1920 से लेकर 2020 तक, यानी 100 ईयर्स में वो 65 प्लस की एज वाले लोग इंक्रीज कर गए हैं, यानी एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। और उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में द मोर पीपल वी नीड, we don't have those people. So people are actually not there to work for the economy. अब इसका ताल्लुक आपकी ओवरऑल इकोनॉमी से क्या है? सो लेट्स टॉक इनटू दैट। देखिए, वट एवर रियली हैपन्स इज
whenever there are less people in an economy, there are less contributors to the economy, which means if there would be less people, there would be less GDP growth, which is gross domestic product. अब बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा नंबर है जो बताता है हाउ मच अ पर्सन पर इंडिविजुअल, हाउ मच वन इंडिविजुअल इज केपेबल टू कंट्रीब्यूट इन एन इकोनॉमी। वो कितनी पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन में एक पर्सन कितना कमाता है, कितनी अर्निंग करता है, दैट इज़ अ जीडीपी ग्रोथ। और उस नंबर को हम साथ ऐड कर लेते हैं डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के साथ, यानी वो इंडिविजुअल कितना प्रोडक्टिव है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसके साथ ही गवर्नमेंट्स ये देखती है कि कितनी डेट ग्रोथ भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई, द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज़ हाई, तो आपकी डेट ग्रोथ कम होगी, यानी आपकी गवर्नमेंट को आपके अगेंस्ट कम लोन्स लेने पड़ेंगे। लेकिन इन द सेम वे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कम है, तो फिर डेट ग्रोथ इंक्रीज होगी, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेने पड़ेंगे। सो दैट इज़ वट टेलिंग अस कि जब पॉपुलेशन ही कम होगी तो देयर विल बी लेस प्रोडक्टिव पीपल, लेस पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। इन द सेम वे आपका जो डेट है, आपकी गवर्नमेंट जो डेट लेगी वो ज़्यादा होगा। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, बट वट अबाउट द डेवलप्ड कंट्री, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, वट अबाउट दैम? दे आर नॉट रियली इन दैट स्टेट टू बेसिकली सी कि वो किस तरह से अपने आप को इस पूरे सर्कल से निकालेंगे, बिकॉज उनके नंबर्स के अंदर हमारे पास कुछ एस्टॉनिशिंग फिगर्स हैं, यानी कुछ इस तरह के फिगर्स हैं जो कि फॉर सम टाइम हमें थोड़े से हैरान कन लगेंगे। अगर आपके सामने स्क्रीन पर यूएस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वर्सेस गवर्नमेंट डेट का जो है वो डाटा है, जो बता रहा है यूएस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है हैज़ डिक्रीज, यानी देयर आर लेस पीपल इन द यूएस इकोनॉमी टू वर्क फॉर देम। उसके अलावा जो उनका जीडीपी ग्रोथ है वो भी डिक्रीज करती जा रही है, विच मीन्स दैट द पॉपुलेशन इन यूएसए इज डिक्लाइनिंग। सो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है? there are two key takeaways from this, which are that there are non-productive humans, यानी there are people but they are not that productive, they are not productive towards the community, they are not productive towards the economy, जिसकी वजह से solvent रहना किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है। And for that they have two solutions. Number one, either to take more loans, or number two, to print more money, which is again bad for the economy. तो इन चीज़ों को देखते हुए व्हाट हैपन इज़ दैट कि जब आपके मुल्क में फर्टिलिटी रेट्स कम हो जाते हैं, आपकी कंट्री में फर्टिलिटी रेट्स यानी कम से कम लोग, पॉपुलेशन आपकी कम होगी, फर्टिलिटी रेट्स कम होंगे, तो आपके ऊपर डेट स्पाइरल, आपके ऊपर डेट बढ़ जाएगा, आपके ऊपर प्रोडक्टिविटी क्योंकि कम है, जीडीपी ग्रोथ कम है, तो दैट इज़ वाई प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से देयर विल बी लेस पीपल इन द इकोनॉमी, रिजल्टेंटली गिविंग यू मोर एंड मोर डेट, यानी उस जगह पे इन्फ्लेशन भी आएगी और उसके साथ साथ उस इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबल डेट स्पाइरल रेट भी बढ़ेगा। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, द गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रिंटिंग मोर मनी, यानी गवर्नमेंट फिर मनी प्रिंट करेगी, विच विल एक्चुअली रिजल्ट डूइंग व्हाट? इट विल गिव मोर मनी टू द पीपल टू स्पेंड, लाइक ऑन गोल्ड, स्टॉक्स एंड ऑन बीटीसी, यानी ऐसे रिजर्व्स जो कि मनी से ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, करेंसी से ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जिसके रिजल्ट में करेंसी तो डिक्लाइन होगी बट रिजल्टेंटली पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन हायर यील्ड एसेट्स, तो जिसमें टेक स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो है, और उसके अलावा जो है वो गोल्ड एंड रियल इस्टेट है, यानी कमोडिटी मार्केट है, लोग वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे। बट इसका सेकेंड सोल्यूशन वो क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया and other economies have another solution for this, and that is instead कि वो अपने लोगों को, अपने ही citizens को जो है वो push करें to have more babies or to expand their population, they start opening gates for other people to come towards their country। और ये immigrants, यानी immigrants इस तरह से आपके किसी भी country में उनके लिए वीज़ाज ओपन किए जाते हैं, उनके लिए इमिग्रेशन गेट्स ओपन किए जाते हैं। सो व्हेनेवर दे कम टू अ कंट्री, दैट those people will actually be the contributive factor for those economies. That is why 2018 में जब जो बाइडन की रजीम स्टार्ट थी, तो उस वक्त यूएस इकोनॉमी ने या यूएस गवर्नमेंट ने 4 मिलियन लीगल इमिग्रेंट्स को परमिशन दी थी टू लिव इन देयर कंट्री, टू वर्क फॉर देम एंड contribute to their GDP growth, which gave us very good numbers, or which gave US very good numbers, but resultantly इससे क्या हुआ? That they have right now the legal immigrants from 1820 से लेके अब तक, this was one of the highest number of US immigrants that were applying in the USA,
उनका ये सबसे बड़ा नंबर था, यानी अब तक इतना बड़ा नंबर कभी भी देखा नहीं गया, यानी 4 million people were allowed to be a part of US economy, to be the US citizens. So that is an astonishing number. But again, इसके रिजल्ट में दे आर गोइंग टू हैव गुड नंबर्स, और जिसकी वजह से हमारे सामने जो GDP ग्रोथ आपके सामने स्क्रीन पे होगी, दैट इज़ high. The GDP growth as compared to the previous time period is high. Although the labor force is declining, but the trend is declining, but the US workforce is getting higher. इसके अलावा एक आपको मैं बता दूं कि this is just a state of the USA. But what about other countries? What about China? What about European countries? Let's talk about them. If you see the immigration rate in China, which is actually not expanding but decreasing, because China does not allow any immigrants to come from their country. Resultantly, they have a decrease in immigration. They do not have any kind of law where you can be a part of Chinese government, where you can contribute to Chinese government. You can work there for some time as an investor for some time, but you cannot be part of their economy, just like you do in USA. In the same way, अगर आप देखो, there is a percentage of GDP which is contributing towards them, because USA, and comparison to that, China right now is not only printing money, they are not allowing people to be a part of their economy. Rather, they are just printing more and more dollars, which actually will result in what? Which will actually result in more and more high inflation. In the same contrast, we have the Japanese doing the same. Japanese are also kind of doing the same thing. They have an aging population. Their population as compared to other countries, aging population यानी वो population जिनकी age 60 से plus है, they are more in Japan, and they're not allowing people to be a part of Japanese economy. You cannot be their citizen. You can just go there, study, and simply leave, but they will not allow you to be a Japanese citizen. In the same way, China is doing the same. But contrastingly, China's population is also decreasing. Why so? Because their population fertility rates are also declining there. उसके साथ साथ the aging population in China and Japan are increasing. Along with कि China में बहुत से population are not immigrating, rather emigrating, which means they are leaving the Chinese. They're leaving China right now. तो इस तरह से हमारे सामने कुछ नंबर्स हैं जो कि बताते हैं कि why the global liquidity is important, why the people or the governments should enhance more immigration to their people, so that if the fertility rates are declining, they should rather invite people from other countries and start making them or giving them citizenship, so that they can increase their GDP instead of pushing their own people to have more babies and become a part of their GDP growth. अच्छा, अब इस चीज़ के साथ साथ हमारे पास आज कुछ ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाउ दिस एंटायर ग्लोबल सप्लाई GDP supply is going to increase. See, if USA, which is actually the world's biggest power right now, has more and more people coming in, it is going to tell that those people will be working for USA, यानी वो लोग USA के लिए काम करेंगे. They will be the part of US economy. So if they will be part of US economy, the price of money or printing more money will be less, which means that the GDP growth will be high and people will be more productive. More people will be working in the US economy, which will resultantly increase the value of dollar. And if you have good value of dollar, you will be having more better stable coins, resultantly increasing giving the people supply of more money, resultantly going into BTC price. So right now, अगर हम BTC की बात करें, it is actually in that way trajectory जहाँ पे हम उसको देखना चाहते हैं, because we're already in the start of the bull run. By 2025 March, we're going to see Bitcoin at a very nice price, because we will be in the very nice ideal spot or ideal banana zone. A banana zone क्या है? Banana zone वो zone है cryptocurrency का, which tells you that the cryptocurrency or the BTC is at the ideal zone. It is at one of the highest beautiful spot of its all-time high, यानी अपनी price के सबसे खूबसूरत पॉइंट पे बैठा है. So that is what all today's video is about. If you really like my content and if you want to watch more of it, have more good insights about the market, I'll make more videos. You can give me suggestions in the comments. But before I end the video, I suggest and I request to leave this with a comment, a like,
And do not forget to subscribe to the channel. Have a good one.